In this video, we are going to discuss relative velocity. We know that motion is relative quantity. Motion and rest both are relative quantity. हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट मेरे लिए रेस्ट में है तो दूसरे के लिए वो मोशन में हो सकता है, या मेरे लिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो दूसरे के लिए रेस्ट में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, that if a person is sitting in a bus and bus is moving with a speed of 10 meter per second, and this is person A. Another person is standing on the ground B. He will observe the velocity of A 10 meter per second. But if the B is sitting with A in the same bus, what will happen? The velocity of A with respect to B, or B will observe zero velocity of A with respect to himself. तो अगर B जब बस से बाहर था तो A को उसने मोशन में देखा, लेकिन जब B जो है A के साथ बस में बैठ गया तो उसने A की वेलोसिटी जीरो देखी. कहां डिफरेंस है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट से. एक बार ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द ग्राउंड था, दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां था? बस के अंदर था. वेलोसिटी, acceleration, displacement, distance depends on the frame of reference. What is frame of reference? Frame of reference means point from where we are taking the observation. Observation point. Right? Observer कहाँ पे है? जहां पे observer बैठा है वही हमारा frame of reference है. Observer ground पे था, this is our frame of reference. Observer बस के अंदर बैठा है, this is our frame of reference. Observer is in the train, then the train is our frame of reference. ठीक है? Now, how we are going to calculate the velocity of A with respect to B? We are going to use very simple formula, that velocity of A with respect to B in vector form, vector VA minus vector. Let us consider this case when the observer is on the ground and A is moving with speed 10 meter per second in a bus. Apply this formula. Now velocity of A observed by B, that is VAB, equal to velocity, magnitude of velocity of A, this direction, this is 10 meter per second, minus velocity of B, this will be 0. That is velocity of A with respect to B will be 10 meter per second. Clear? Now, what will be the velocity of B with respect to A? अब A जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जा रहा था और B जो है रेस्ट में है, तो A जो है B की कितनी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा? दैट इज वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इक्वल टू VB, वेक्टर VB माइनस वेक्टर BA. Right? Now VA equal to velocity of B, in this case it is in the rest, 0 minus velocity of A 10 meter per second. This will be 10 meter per second minus. What we are getting here?
वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी, बी जो है ए की वेलोसिटी देख रहा है, तो कितना मिल रहा है इसको 10 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव आ रहा है. व्हाट इट मीन? इट मीन्स दैट ए इज मूविंग अवे फ्रॉम बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. नाउ second case we are getting velocity of b with respect to a is minus 10 meter per second. Minus 10 meter per second means what A will observe? A will observe that B is moving in backward direction. पीछे जा रहा है. Clear? A क्या ऑब्जर्व करेगा कि B जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. Clear? Now we are taking another case in which A and B both are in the same bus which is moving with speed of 10 meter per second. In this case, velocity of A with respect to B, I have given it here, V vector B है minus vector B. That is VAB. Velocity of A is moving in this direction 10 meter per second. B is also moving in this direction, same direction. This will be 10 meter per second. That is velocity of A with respect to B will be 0 meter per second. Clear? Now we are going to do some problems based on the relative motion. Let us discuss question number 1, that this is B and it is moving with speed 20 meter per second, velocity 20 meter per second, and this is A, is also moving with speed 10 meter per second. This is A. What is the relative velocity of A with respect to B, and what is the relative velocity of B with respect to A? First of all, velocity of A with respect to B. Velocity of A with respect to B equal to vector VA minus vector VB. याद रखिए ये जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है. ठीक. Now velocity of A with respect to B equal to velocity of A with respect to ground. This is 10 meter per second minus velocity of B with respect to ground. This is 20. Since velocity of A and B both are in the same direction, therefore both have the same sign. Velocity of A with respect to B, this will be minus 10 meter per second. This is velocity of A. Velocity of A with respect to B. That is what? B जो है A की कितनी वेलोसिटी देखेगा? तो B जो है A की वेलोसिटी देखेगा -10 मीटर पर सेकेंड. कहने का मतलब ये हुआ कि B जो है ऑब्जर्व करेगा कि A जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है. क्लियर? ये माइनस साइन का मतलब ये हुआ कि B विल ऑब्जर्व दैट दिस A इज कमिंग विद a स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स हिमसेल्फ. Similarly, velocity of B with respect to A, velocity of B minus velocity of A, all will be in vector form. At सब के सब ये ground के respect. Now, velocity of B with respect to A, velocity of B with respect to ground is 20. Velocity of A with respect to ground
This is 10 meter per second. Velocity of B with respect to A equal to 10 meter per second. Now, velocity of B with respect to A. Now, what the velocity A observed, अब A जो है B की velocity कितना ऑब्जर्व कर रहा है, राइट? इट इज ऑब्जर्विंग 10 मीटर पर सेकेंड. प्लस में आ रहा है. व्हाट इट मीन? A will observe that B is coming toward A with speed of 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक, देखो B की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन A क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है B की कितनी वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकेंड. क्यों? क्योंकि A की अपनी भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी वेलोसिटी में से ये वेलोसिटी जो है वो माइनस होगी. दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस मच. क्लियर हो गया? नाउ A is moving with speed of 10 meter per second. Clear? But B is observing the velocity of A is how much? Minus 10 meter per second. ऐसा क्यों? क्योंकि B भी मोशन में है, राइट? और जब B A को देख रहा है तो A की वेलोसिटी में अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दे रहा है, राइट? B जब A को देख रहा है तो A की वेलोसिटी में अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दे रहा है, या A की वेलोसिटी में से अपनी वेलोसिटी को माइनस कर दे रहा है. दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग minus 10 meter per second. Now we are going to discuss question number 2. This is B and is moving with velocity 10 meter per second in this direction. This is B and this is A. He is moving with velocity 15 meter per second in this direction. This is A. What is the relative velocity of B with respect to A? Now, relative velocity of B with respect to A equal to VB minus VA. Right? All in the vector form, and velocity of A and B are with respect to ground. Now, velocity of B with respect to A equal to how much? Velocity of B is moving in this direction, 10 meter per second, minus velocity of A. A is moving in this direction. It means that its velocity will be minus 15, and this will be 10 plus 15 meter per second. That is velocity of B with respect to A is 25 meter per second. Correct? Now, velocity of A with respect to B. Velocity of A with respect to B. Velocity of A minus velocity of B. Correct? Now, velocity of A with respect to B equal to velocity of A is how much? 15 meter per second in this direction. Right? I am taking this direction is negative 1, minus 15 minus velocity of B. Velocity B is 10 meter per second in this direction, positive direction. This will be 10 meter per second. And velocity of A with respect to B is minus 25 meter per second. Velocity of B with respect to A 25 meter per second. Means what? Velocity of B. किसके velocity? B. किसके रिस्पेक्ट में? A. मीन्स A जो है B की कितनी वेलोसिटी देख रहे हैं? 25 मीटर
पर सेकेंड। मीन्स ए जो है बी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो बी उसको 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपनी तरफ आते हुए दिख रहा है, राइट। हियर व्हाट इज दिस? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कौन ऑब्जर्व कर रहा है? बी जो है ए की वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा है। कितना ऑब्जर्व कर रहा है? -25 मीटर पर सेकेंड। मीन्स बी को लग रहा है कि ए जो है उसकी तरफ इस डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, इसलिए यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि एक बार ऑब्जर्वर यहां पे है, एक बार ऑब्जर्वर यहां पे है, वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों ही केस में अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। दैट्स व्हाई साइंस भी अलग अलग है, ठीक। नाउ वन मोर क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस one more problem that will be on the relative acceleration, that this is A and its initial velocity is 0 and its acceleration is 1 meter per second square, sorry. And this is A and this is B. This is B and its initial speed is 20 meter per second. This distance is 150 meter. Now we have to calculate when B will meet A. B A को कहां मिलेगा और कब मिलेगा? क्लियर? Here initial velocity of B is 20 meter per second, initial velocity of A is 0, acceleration of A is 1 meter per second square, distance between 2 points is 150 meter. Now initial relative velocity of B with respect to A is UB minus UA, that is UBA equal to 20, initial velocity is 0, that is minus 0, that is initial relative velocity of B with respect to A is 20 meter per second. Now relative acceleration of B with respect to A, that will be acceleration of B minus acceleration of A. Remember ये सारे के सारे चीजें जो वेलोसिटी लिया है रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो this is equal to acceleration of B is 0 and acceleration of A is 1 meter per second square, that is acceleration of B with respect to A equal to minus 1 meter per second square, right. Distance or displacement is how much? Relative is 150 meter. This distance between 2 points does not depends on the frame of reference. वो किसी frame of reference पर depend नहीं करता. Time भी frame of reference पर depend नहीं करता. Now S equal to UT plus half AT square. Now use this relation and calculate the value of T, right? Thank you.